So adrenal medulla, secretes two hormones. One is called as adrenaline, also called as epinephrine, and the second hormone is noradrenaline, which is called as norepinephrine. सो बेसिकली एड्रिनल मेडुला जो होता है वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है. एक होता है एड्रिनलिन जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एंड नॉर एड्रिनलिन जिसको नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं. सो दीज टू हार्मोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैटेकोलामाइन्स. And these hormones are secreted in response to stress or emergency situation. So ये एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन दोनों हार्मोन्स को कलेक्टिवली हम कैटेकोलामाइन्स कहते हैं. ये जो हार्मोन्स होते हैं ये रिलीज होते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या किसी एमरजेंसी सिचुएशन में. एंड इसी कारण इन हार्मोन्स को क्या कहते हैं? दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एज emergency hormones or hormones of fight or flight. So as I have told that these hormones are released in case of stress or in emergency. That is why the name of this hormones is emergency hormones, or they are called as fight or flight hormones, because they are released when there is a fight or a flight. Flight means when we are very worried, when we are anxious, stressed. So these are fight or flight hormones and emergency hormones. So what is their function? These hormones, adrenaline and noradrenaline, so basically they increase everything. Obviously जब भी हम किसी टेंशन में होंगे, हम किसी स्ट्रेस में होंगे, हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, तो हम क्या करेंगे? हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, स्वेटिंग होने लगेगी, हम अलर्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. सो व्हाट डू दे डू? दे इंक्रीज. What do they increase? Everything they increase basically. So they increase pupillary dilation. That means जो pupil है वो dilate होता है, बहुत ज़्यादा increase कर देते हैं. And piloerection. What is piloerection? Piloerection you must have experienced, everyone, each one of you, even I have experienced piloerection. So what is piloerection? It is raising of hairs. Sometimes when someone is telling us some horror story or there is some bad news which is like very touching, so in that case our hairs, they become erect. Our body hairs, like a hair on the arms and the legs, they get erect. So that is piloerection. So that is also a result of these hormones. Then they also increase alertness. So basically this is a body's response, because there is a situation in which a lot of alertness is required, a lot of stress is there, so we get more alert, because there is like we get to know there is some like bad news. So our body increases, like everything, the heartbeat is increased and the respiration rate is increased, and our hairs become erect, body hairs get erect, and there is increase in glucose. So this is in response. So this is a response thing that happens as a result of any kind of stress situation, so that our body is able to cope with that. Because if our body is not able to cope with stress, if our hormones are not, gland is not working properly, our body is not able to cope with stress, then if our heartbeat is not increased, like blood is not transported properly to all body parts, that will result in heart attack. So basically अगर मैं कहूँ इसे तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स है. स्ट्रेस हार्मोन्स
रिलीज़ क्यों होते हैं? बिकॉज हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस है, ताकि हमें उस स्ट्रेस में हम कोप अप कर सके बेटर। हम कोप अप तभी कर सकेंगे उस कंडीशन में बिकॉज जब हमारी बॉडी उस चीज़ को अडाप्ट करेगी। कई बार ऐसा होता है जैसे सम लाइक बैड न्यूज़ है कोई एंड पर्सन इज़ नॉट क्राइंग, तो कहते हैं कि बहुत उसका रोना ज़रूरी है, वो रोएगा तभी उसकी सिचुएशन ठीक होगी, बिकॉज इमोशनल आउटफ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कंडीशन हो, एंग्री हैं हम, खुश हैं हम, या हम गुस्से में हैं, या हम लाइक बहुत अपसेट है, कोई सैड न्यूज़ है, सो इसलिए बिकॉज उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का आउटफ्लो होगा, हमारे हार्मोन्स प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। सो ये हार्मोन्स इसीलिए रिलीज़ होते हैं ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। जो भी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा खुशी है या बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, ताकि हम उसको ईजिली उससे कोप अप कर सकें। And also because डर भी related है इससे, so it also results in sweating and increase in heartbeat. Obviously our heartbeat increases because जब भी हमें टेंशन होगी, डर होगा किसी चीज़ का, तो हमारी हार्ट बीट तो ऑब्वियसली बढ़ती है एंड हमारा रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज होता है। सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन आवर रेस्पिरेशन रेट एज वेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्लूकोज concentration in blood also increases. सो ये चीज़ें हैं जो इस हार्मोन्स के कारण इंक्रीज होती हैं एंड हमारी इफ़ेक्ट करती हैं बॉडी को। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स, अब हमने एड्रिनल मेडुला की बात की जिसमें देयर आर टू हार्मोन्स, एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन। दे आर लाइक emergency hormones and they are released in case of stress conditions. And now we'll be talking about adrenal cortex. So basically adrenal cortex 3 layers में divided है. So the 3 layers are zona reticularis, zona fasciculata, and zona glomerulosa. So जो inner layer है, the innermost layer is zona reticularis, the middle layer is zona fasciculata, and the outermost layer is zona glomerulosa. So basically adrenal cortex secretes many hormones. These hormones are called as corticoids. The corticoids which are responsible for carbohydrate metabolism those are called as glucocorticoids, and the ones which are responsible for the metabolism, that is which are responsible for the maintaining the balance of water and electrolytes, those corticoids are called as mineralocorticoids. So mainly basically the glucocorticoid is cortisol,